90 kilometers from Ranchi, the Karo River sweeps through a fertile valley of centuries-old tribal villages. In 1983, the Bihar government, with NHPC, the National Hydroelectric Power Corporation, started work on a 724-megawatt Koil Karo power project. This bridge was the first vital step to building the dam. If the dam were built, 112 villages would disappear. Over 7,000 households would lose their land and livelihood. But the dam could not be built. Across the project area, villages joined together in a struggle of non-violent obstruction of project vehicles and brought the Koil Karo project to a halt. But with statehood, the new Jharkhand government and NHPC restarted the project. This time, the stopping of police vehicles was met by firing at Tapkara on the 2nd of February 2001, killing 8 protesters. Little known, locally organized and led, the Koil Karo movement has shown the way to a new path of Adivasi resistance. The organized assertion of Adivasi control over Adivasi environment. आजाद भारत की ये पहली घटना है। ये इस देश के लोगों को भी समझना होगा, झारखंड के लोगों को भी, कि तपकारा थाने में घिराव हुआ, गोली चली, भयानक जन असंतोष हुआ। आज तक तपकारा थाना फिर से बहाल नहीं हुआ। इस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो यहां प्रतिवाद की क्षमता और इस क्षमता के कारण सरकार के खौफ को आप नहीं समझ सकेंगे। Through the 80s, the spirit of Koil Karo had spread. In the 90s, the Bihar government moved to take over 1,471 square kilometers of land near Netarhat to serve as the field firing range for the Indian Army's heavy artillery. People from the 245 villages that were to be displaced united to resist the army and stopped Indian Army convoys from entering the notified area. Once more, self-organized, beyond the reach of the political parties. इसको तो पहले से सोचा समझा गया एक षड्यंत्र है कि माने जहां जहां आदिवासी लोग के ज्यादा बेल्ट है वहां बड़ा बड़ा परियोजना बना के उसको भी स्थापन करना, लोगों को हटाना, उसकी संस्कृति समाज को खत्म कर देना, यही तो एक षड्यंत्र है इनका। During the 1990s, a new language of Adivasi power took shape in Jharkhand. A new concept of control, not over the state, but over their local environments. They called it self-rule. Control of the marketplace at Barambe was a vital turning point. A thriving vegetable center of many years, till 1999, Barambe Haat was controlled by traders and their touts. A setup that had always shortchanged the Adivasi vegetable grower. In 1997, the local villages organized themselves and demanded the right to run the market according to the rules of scheduled areas.
हमारा जमीन है और हम लोग बाजार चलाएंगे और ये बाजार हम लोग को मिलना चाहिए। जब हम लोग ऐसा करने लगे तो जो दलाल लोग थे वो सरकार से मिलके, प्रशासन से मिलके हम लोग के ऊपर अत्याचार करने लगे। तो हम लोग पूरा गांव वाला यूनाइट हो गए, पाढ़ा और ग्राम सभा यूनाइट होने के बाद हम लोग के साथ में लोग गोली चलाने लगा। तो हम लोग पूरा ढेल मुगरा, लाठी डंडा, महिला सब निकले और हम लोग भी लड़ने लगे और खदेड़ने लगे। उसी बीच में हमारे एक साथी जो था सौना उराव, सौना तिग्गा, उसको गोली लग गया और वो आदमी वहीं पर मर गया। The firing at Barambe forced the government to hand over the market to an Adivasi organized bazaar committee. ये ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग 15 सदस्यीय समिति का गठन किए हैं और जिसमें संचालन समिति है, 15 सदस्य हैं। इसके अलावे मतलब बाजार में 50-55 लड़के हैं जो इस बाजार को नियंत्रण करते हैं। 6 लाख का जो है रेवेन्यू है, 6 लाख साल में हम लोग जो है सरकार को जमा करते हैं। उसके बाद जो बचता है आपस में हम लोग करीबन, जैसे हमने बताया 50-65 गो लड़का लोग है, आपस में हम लोग जो होता है करते हैं। इसका प्रभाव यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर का दूरी में लोगों का प्रभाव पड़ गया और वो देखा देखी प्राय हर बस्ती का, हर गांव का लोग अपना कुछ न कुछ बिजनेस का ये रास्ता इख्तियार कर लिया। The struggle for control over local environments is a struggle to enforce the customary powers of the Gram Sabha. The Indian Parliament's PESA Act of 1995 makes Adivasi village councils responsible for local governance in the scheduled areas. But the state government wants to hold local elections, setting aside the PESA Act, bypassing Adivasi Gram Sabhas. In September 2005, a Jharkhand High Court judgment struck down the principle of Adivasi leadership in scheduled area panchayats. और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में जो पाढ़ा राजा व्यवस्था है, उरांव और मुंडा के बीच में हो, समाज के बीच में मान की मुंडा व्यवस्था है और संथाल के बीच में माझी प्रगणित व्यवस्था है और खड़िया समुदाय के बीच में डोकलो सोहर व्यवस्था है, उसको मान्यता दिया जाए, पंचायत चुनाव का बकवास बंद किया जाए। ग्राम सभा के अधिकार को लूटने वाले अधिकारी सावधान, सावधान, सावधान। सभी प्रकार के योजनाओं का अनुमोदन ग्राम सभा से कराया जाए। At stake is government expenditure on local development. नंद कुमार का दिया गया ग्राम सभा का अधिकार। Also at stake is the control of local water and forest resources. नागपुर के कमिश्नर जिस दिन 24 दिसंबर 1996 को इसका कानून पारित हुआ था, जितना सारा गांव समृद्ध योजना चलेगा ये दलाल सभा से नहीं चलेगा। तो जो आज हम ग्राम सभा के माध्यम से जब हम काम करने चाह रहे हैं, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो या तो न्यायपालिका हो, वो हमारा हित नहीं चाहते, हमारा भाषा ही वो नहीं समझते। In the village of Kundri Jhur in West Singhbhum, the Gram Sabha has formed a forest protection committee. A timber mafia in league with employees of the forest department was plundering their forests. The village's consumption of and income from forest produce were under threat. In October 2001, members of the committee fought off the mafia
and took over 1,500 acres of forest land. In 4 years, the people of Kundri Jhur regrew their lost forests. The forest department was forced to accept Adivasi control. इनका तो नहीं बोलो सान कुछ चेक रहते सान इनका लाख सान तो बनवा तट को चना इना में तो अबू वारन होन को अबू तो की बु समझा को या मेटिनर लिखा कोई उनको हर हमेशा मेटिनर बु किया को सबन बैठे की युवा ताकि ने लिखा को कायु में चिका के इनका अंदर कब माए अंदर को माए. More and more villages have taken the same path, growing into a statewide forest protection movement. Today, there are 31 active groups in 7 districts, controlling 100,000 acres of reclaimed forests. The government has moved to contain this groundswell. But the forest department's attempts to form village forest committees has few takers. हम लोग समझ रहे हैं कि ये है सो धीरे धीरे घुस रहा है हम लोग के अंदर में और ये है सो कुछ दिन के बाद में वो अपना जंगल मिटाने का प्रयास कर रहा है. इसलिए ख्याल से हम लोग उस समिति में ज्वाइन नहीं होना चाहते. Instead, the demand is self-rule. Direct action to take over forests led by Adivasis under the authority of the Gram Sabhas. सब मुंडा एकत्रित होकर के यहाँ एक तो संगठन का एकता हम लोग जुट कर रहे हैं और इसमें सरकार को पेश करेंगे कि हम लोग को वापस किया जाए और नहीं तो लास्ट में और विषय जैसा किया जाएगा उस आंदोलन में हम लोग उतर जाएंगे चाहे शहीद हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हम लोग लेके रहेंगे. इतने लोग बाहर गई है दाई का काम करने. पहले क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि हमारा सब कुछ यहाँ था, जंगल था, झाड़ था, सब संपदा यहाँ थी. हम लोगों के लिए सब कुछ पूर्ति होता था. अभी नहीं है. ये पेट भरने के लिए लोग बाहर जाते हैं और जब जाते हैं तो उनका पूरा शोषण होता है. जहाँ भी जाइए सब राज्य में लोग अपना अपना जगह पकड़ के रखा है. लेकिन हमारे इस राज्य में क्यों आप लोग आ रहे हैं? आप लोग को यहाँ क्यों इतना इंटरेस्ट है? On the hills of Kundri Jhur, members of the forest committee share responsibility, guarding their young forests round the clock. As long as industrial considerations remain India's dominant interest in Jharkhand, little can change for the Adivasi. 50% of India's oil is imported. 70% of Indian industry's fuel is coal. 37% of India's coal and 23% iron is from Jharkhand. Even today, a global steel boom wants more iron and more coal.